Hello students, welcome to our JEE Advanced 2026 Expected Conceptual Question Series। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 11 है। तो हम लोग इससे पहले 10 क्वेश्चंस कर चुके थे। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका जो सीरीज में हम लोग को बहुत कुछ रेस्पॉन्ड मिला, मोर देन 1 के व्यूज भी आया। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जो एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स होता है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शेयर करो, उसके कम्युनिटी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर शेयर करो और दो जो हु आर वाचिंग दिस वीडियोज एंड आल्सो सब्सक्राइब एंड आल्सो लाइक एंड सब कमेंट्स आल्सो देयर। आई also awaited your comments. Okay, so ये जो सीरीज का क्वेश्चंस है 11 नंबर, इट इज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस फॉर द जेई एडवांस। जेई एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम में अगर हम लोग देखेंगे 48 49 ईयर्स में, 48 ईयर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर एक दो साल शायद गैप हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम में कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। एक एक साल में तो दो तीन क्वेश्चन आता रहता है। तो मोस्ट ऑफ द हॉट टॉपिक्स फॉर द जेई एडवांस, ऑल्सो दिस क्वेश्चंस also very important for the JEE main second slot, second session examination which held on the April, first week of the April, and also ISI Indian Statistical Institute and also the CMI Chennai Mathematical Institute। ये जो चार एग्जामिनेशन है जेई एडवांस एंड आईएसआई जेई मेन एंड सीएमआई, उसको देख के मैं सीरीज जो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये इसमें मैं थोड़ा एक काम किया हूँ, एडवांस को देख के क्वेश्चंस बनाया। तो जेई मेन में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, let us start the questions. If the complex number z for which argument of 3z minus 9 minus 3i over 4z minus 20 plus 8i equal to pi by 4 and modulus of the z minus 1 plus 2i equal to 2 are a minus under root of 10 plus I times this and a plus 2 by root 10 plus I times of b minus this respectively, the set order pairs the a b is 1 2 minus 1 2 and 1 minus 2 and minus 2 1। ये क्वेश्चंस मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम में डिफरेंट सोर्स से सिलेक्ट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलो इसमें सिंपली हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज आर्गुमेंट इज गिवन। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम में तो हम लोगों का सॉल्यूशन पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं गिवन क्वांटिटी क्या दिया है। सो गिवन दैट द आर्गुमेंट ऑफ 3z minus 9 minus 3 iota divided by 4z minus 20 plus 8i इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ हम लोग 3 कॉमन ले जाते हैं, न्यूमरेटर से 3 कॉमन ले जाते हैं, 4 डिनोमिनेटर से कॉमन ले जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जेड माइनस 3 माइनस आई डिवाइडेड बाय जेड माइनस 5 प्लस 2i इक्वल टू पाई बाई 4। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको आर्गुमेंट ऑफ 3/4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 3 माइनस आई ओवर जेड माइनस 5 प्लस 2i इक्वल टू पाई बाई 4। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग का आर्गुमेंट का जो रूल है वो हम लोग का लॉगरिदमिक का रूल के साथ भी सेम है। तो ये प्रोडक्ट में है तो एडिशन हो जाएगा आर्गुमेंट में। तो हम लोग नेक्स्ट में लिखते हैं कि देन आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 3 प्लस माइनस आई
over z minus 5 plus 2i iota equal to pi by 4. Because argument of real numbers are 0. So argument of 3 by 4 equal to 0 because it is real. Okay. Argument of the real numbers are 0. Now we put let z equal to x plus iy. उसमें हम लोग प्लग करते हैं इस आर्गुमेंट में. सो आर्गुमेंट ऑफ x minus 3 plus I times y minus 1 divided by x minus 5 plus iota times y plus 2 equal to pi by 4. Then argument of x minus 3 whole into x minus 5 plus y minus 1 times y plus 2 divided by इसको आगे बढ़ा लेते हैं आयोटा टाइम्स ऑफ y minus 1 all into x minus 5 minus x minus 3 all into y plus 2. Okay. So this is my numerator divided by x minus 5 whole square plus y plus 2 whole square equal to pi by 4. ये थोड़ा सा लंबा होगा. Then we should rationalization just के है. So y minus 1 from this expression y minus 1 whole into x minus 5 minus of x minus 3 whole into y plus 2 equal to, because tan pi by 4 is argument means tan pi by 4 it is 1. So it is x minus 3 whole into x minus 5 plus y minus 1 whole into y plus 2. So this should be equation 1. When we multiply this, we get x square plus y square minus 5x plus 3y plus 2 equal to 0. This should be equation 1. Okay, so this should be equation 1. And also, and z minus 1 plus 2y, it is given that it is modulus equal to 2. That implies that. So plug x plus iy in place of the z. So this is x minus 1 whole square plus y plus 2 whole square equal to 4. So this is x square plus y square minus 2x plus 4y plus 1 equal to 0. So this should be the considered as to be equation 1. Now we have to subtracting equation 1 and 2 and equating we get subtract karo. Now subtracting equation 1 and 2 we get 3x plus y minus 1 equal to 0 and also y equal to 1 minus 3x. So this is very simple. We have to consider as to be equation 3.
And now from 1 and 3, now from 1 and 3, so equation 1 and 3, we get x square plus 1 minus 3x whole square minus 5x plus 3 whole into 1 minus 3x plus 2 equal to 0. So that means it should be 10x square, 9x square plus x square, 10x square. Yes, minus 20x plus 6 equal to 0. Then taking common 2, this is 5x square minus 10x plus 3 equal to 0. So now we have to find what is the value of x. So x equal to 10 minus b plus minus b square. So it is 2 root 10 divided by 10. So this is the value of x. Now we should put the value of y, put the value of x in the y equal to 1 minus 3x. So we get then y equal to minus 20 minus plus 6 root 10 divided by 10. It is minus 2 minus plus 6 by under root of 10. So x equal to 1 plus minus 2 by under root of 10 and y equal to 2 minus plus 6 by under root of 10. So then my complex number x plus iy means 1 plus minus 2 over root 10. This is the real part, plus imaginary part should be minus 2 minus plus, okay, minus plus 6 over root 10, right? So then we have to arrange as the a plus minus 2 over root 10 plus I times of b minus plus 6 over root 10. So order pair by comparison, complex number, this complex number by comparison, a should be 1 and b should be minus 2. So a should be 1 and b should be minus 2. 1 minus 2 order pair should be 1 minus 2. So mostly answer is the C is the correct answer. ये एक आर्गुमेंट के ऊपर क्वेश्चंस था और try to understand everyone how to convert it into the normal complex number and to find the x and y value. Okay, and here some rules are also using how to argument rules also, how to resolve that. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है. तो आगे हम लोग सोचेंगे कि इसके आगे और भी क्वेश्चंस आए. ये 11th नंबर क्वेश्चंस था. I think that so this is very important concept for this year or JEE Main, JEE Advanced and also the ISI, CMI. So hope all of you should understand very better. Thanks to all of you, and please like, subscribe and share also. Thank you.